Hello and welcome. Welcome to learning session number 3 of chapter number 3 of Science 1, which is chemical reactions and equations. Okay. So far, what all have we seen in this particular chapter? We had seen introduction. Then we had seen what are chemical changes and what are physical changes. Chemical changes are those in which bonds are broken and new bonds are formed. And physical changes are basically change in the state of matter. Okay. Is it solid to liquid state, liquid to gaseous state, solid to gaseous state, so on and so forth. Those are all physical changes. Then we had seen a few chemical reactions through various activities or experiments, and we had seen finally chemical equations. So chemical reactions are represented by chemical equations. Okay. Today we are going to see balanced chemical equations, and your objective for today is going to be students will be able to write balanced chemical equations. Okay, that's your objective for today. At the beginning of each and every learning session in this particular chapter, I'm going to bring this slide up and I'm going to bring this table up just to remind you all that by hearting this particular table is very important for you all to understand how names of various molecular formula are written and how do you write molecular formula if you know the name of the molecule. Okay. If you don't by heart this table, it will be very difficult. You will feel this chapter is very difficult. And if you by heart this, all the chemistry chapters will feel easy to you. Okay, so it's very important that you all by heart this particular table. Okay, so what is a balanced chemical equation? So here they have given an equation. Before we actually start answering this question, why is there a downwards arrow here? Uska kya matlab hota hai? So whenever there's a downwards arrow in your product side, then it means that there is some precipitate forming. We had seen last time, right? Precipitate का क्या मतलब है? Precipitate यानी कोई तो पाउडर जैसी चीज है और वो नीचे सेटल हो रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है और नीचे सेटल हो जाएगी सारी पाउडर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. और व्हाइट क्यों लिखा है? यानी प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट कलर है. ओके, great. So what is a balanced chemical equation, and is this particular given equation is a balanced chemical equation or an unbalanced chemical equation? To answer this question, we will try to fill this particular table. Okay, what have they given in this table? They have written element के नाम. Okay, so here first element is Ag, which is silver, उसको यहाँ पे लिख दिया. N, which is nitrogen, इसको यहाँ पे लिख दिया. O, which is oxygen, is been written here. Na is sodium, it has been written here. Cl is chlorine, has been written last. Okay, I need not check here because यहाँ पे जो elements है same elements यहाँ पे होंगे, right? यहाँ पे कोई extra element नहीं हो सकता, वरना अगर कोई extra element आ गई यानी a new element was formed during the reaction, which is not possible. और कोई भी element कम नहीं हुआ क्योंकि कोई भी reaction के दौरान कोई element गायब नहीं हो सकता, right? So whatever elements are being used here in the reactants, the same elements will be there in the products also. So you only have to see one side. Okay. Then reactants on the left side, products on the right side. We have to put in number of atoms. Okay. For example, लेफ्ट साइड में कितने Ag के एटम्स है? यहाँ पे Ag है और कहीं पे भी Ag नहीं है. सो सिल्वर का लेफ्ट साइड पे 1 एटम है एंड राइट साइड में कितने हैं? हियर आई कैन सी 1 एटम, नो अदर एटम. सो राइट साइड में भी 1 एटम. ओके, सिमिलरली नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में आई कैन सी 1 एटम. दिस इज नॉट नाइट्रोजन. ओके, Na, दिस इज नॉट ओनली Na सोडियम होता है, नॉट नाइट्रोजन. सो यहाँ पे ओनली 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. सो आई पुट हियर 1 एंड राइट साइड में again I have only 1 atom of nitrogen, so here I'll have to put 1. Next, oxygen. Here I can see 3 atoms of oxygen. Right side maybe 3 atoms of oxygen. So 3, 3. Okay. Next, sodium. I can see 1 over here. So put 1 here and 1 over here. So put 1 here. Finally, chlorine. 1 atom over here and 1 atom on the right hand side. Okay. So 1 atom here, 1 atom right hand side. So now if you noticed, यहाँ पे जो numbers है, same numbers right side में आ रहे हैं. Right? What does that mean? That number of elements on the left hand side, which is reactants, is equal to the number of elements on the right hand side, which is products. So whenever these numbers are equals, the दोनों columns में same numbers है, उसका मतलब है ये equation balanced. Okay, this is a balanced chemical equation. So what will be the definition of balanced chemical equation? When the number of atoms of elements in reactants, okay, ये जो अलग अलग elements है उसके atoms, कितने atoms है, is same as the number of atoms of elements in products. Okay, so left side में या फिर reactants में जो elements के atoms है और right side में जो elements के atoms है वो दोनों equal होंगे. Then
the equation is called a balanced equation. Okay, that's your definition of balanced chemical equation, and this is your example of balanced chemical equation. Okay. Okay, so this is an interesting fact to remember. Okay, it's not related to your balanced chemical equation, but just an interesting fact to know. So in any reaction, the total mass of each elements in the reactants is same as the total mass of each respective elements in the products. इसका मतलब क्या है? If you take 5 grams of Ag in the reactants, after the reaction, you should have 5 grams of Ag in the products also. Okay, अगर यहाँ पे 5 ग्राम of Ag लिया और यहाँ पे 6 ग्राम of Ag हो गया. Okay, इसका मतलब क्या है कि 1 gram of extra silver was produced during the reaction, which is not possible. Another example would be if you say you have 3 grams of sodium at the beginning of the reaction. At the end of the reaction also you should have 3 grams of sodium. Okay, अगर ये 3 ग्राम का 1 ग्राम हो गया, it means 2 grams गायब हो गए, they got disappeared again, which is not possible. Okay, so the mass of reactants should be equal to mass of products, and mass of each and every element should be equal to mass of each and every element in reactants as well as products. Okay, and this is in accordance with the law of conservation of mass that you have studied in the previous standard. पहले तुम लोग ने पढ़ा होगा is law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? Mass can neither be created nor be destroyed. Okay, great. With that, let us move ahead. So these are the steps to write a balanced chemical reaction. Okay, so I'm not going to explain them right now. Just copy these in your notebook, and we're going to I'll explain each and every step through examples. Okay, so right now just copy these steps in your notebooks. We'll move ahead now. So these 4 questions have been given in your textbook. Okay, at the end of your chapter, these 4 equations have been asked to be balanced using steps. Okay, stepwise balance karna, right? So what we are going to do is I'm going to balance 2 equations for you all. So jab main 2 equations balance kar raha hu, you did not copy anything. You all can copy everything at the end, but you only have to pay attention. Okay, so 2 equations I will balance for you all. The third equation we will balance together. Okay, you all will balance the equation step by step, and in between the steps I will be guiding you all, and the last one you all will solve by yourself. So first 2 I will solve for you all, then the last one we will solve together, and the third one you all can do as practice. Okay, so let us look at the second one first. So what does the first step tell us? Write the chemical equation. So that I have done. It's very simple step. You only have to write the chemical equation. Next, first step is done. Second step, what is the second step? Compare the number of atoms of various elements present on the 2 sides of the equation. Okay, so number of atoms of each and every element we have to compare on both the sides. Okay, so this we have already done, right? What you do is first write down the note down all the elements. कौन से elements you will have to make this table. Okay, if you want to balance an equation in a stepwise manner, you'll have to make this table first. So in the first column we have elements. So कितने elements है? S is sulfur, I have put it here. O is oxygen, I have put it here. H is hydrogen, मैंने यहाँ पे लिख दिया. Okay, next reactants के side में left में और products के side में, which is on the right side, how many number of atoms are there? So let us see sulfur first. यहाँ पे I can see 1 sulfur. Here I can see another atom of sulfur. So 1 plus 1, I have 2 atoms of sulfur on left hand side. Right side I have only 1 atom of sulfur. यहाँ पे 1 लिख दिया. So sulfur is done. Next, oxygen. O2 लिखा है. So there are 2 atoms of oxygen. So I write 2 over here, and then again here there is only 1 atom of oxygen. So 1 over here. Lastly, I have 2 atoms of hydrogen, and here also I have 2 atoms of hydrogen. So 2 over here and 2 over here. So is this chemical equation balanced? The answer is no, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के 2 atoms है और यहाँ पे सिर्फ 1 atom. यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 atoms है, यहाँ पे सिर्फ 1 atom. So this is not a balanced chemical reaction. Okay, so we have done that. We have made the comparison. So we are done with step number 2 as well. Okay, now we are going to move on to step number 3. Choose the reactant or product having maximum number of atoms and equalize its atoms on both sides.
एंड एट द एंड हमें चेक भी करना है स्टेप 3 के एंड में कि इक्वेशन बैलेंस हो चुका है या नहीं. Many times what happens is at the end of third step itself, the equation gets balanced. So if equation is balanced at the end of step number 3, you can directly go on to step number 5 without doing step number 4. So at the end of step number 3, we have to check if it is balanced or not. But what is step number 3 telling us? Choose reactants or products having maximum number of atoms and uske atoms ko equalize karna hai. Okay. Okay, so here we have SO2, right? So SO2 means two elements. One is sulfur and the other one is oxygen. Here also you have two elements, hydrogen and sulfur. Here you have only one element, sulfur, and here you have two elements, hydrogen and oxygen. Okay, so here you can either take, so maximum number of elements वाले लेने हैं, right? So यहाँ पे भी दो elements है, यहाँ पे भी दो elements, so इनमें से कोई भी ले लो. But यहाँ पे सिर्फ एक element है, यहाँ पे दो elements. Here you have to take H2O. Okay. So either you can take SO2 and H2O or you can take H2S and H2O. Okay, so अगर समझो तुम लोगों ने H2S ले लिया और H2O ले लिया, यहाँ पे there are two hydrogen atoms, यहाँ पे भी two hydrogen atoms है, तो already balanced है. यहाँ पे you have sulfur, here you have oxygen. So अब इसमें balance करने जैसा कुछ है ही नहीं. So you cannot take H2S and H2O. So what we'll have to take? We have to take SO2 and H2O. So we'll take those two first. Okay. Then again you have to make a table. Here before making the table, you just look at the elements. Okay, here you have one atom of sulfur, you have no sulfur over here. Then you have two atoms of oxygen, you have only one atom of oxygen. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. सो ऑक्सीजन को तुम लोग यहाँ पे इक्वलाइज कर सकते हो. यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम है. सो यू विल मेक दिस टेबल एंड यू विल राइट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन एटम्स को भी इक्वेट करने वाले हैं. सो सेकेंड कॉलम में इन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स यू हैव इन SO2, क्योंकि हम लोग ने उसको चूज किया. एंड इन प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स यू हैव इन H2O. ओके, सो पहले बैलेंस करने से पहले कितने थे? यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स है, सो आई पुट हियर 2. यहाँ पे पहले एक ही था एटम, सो आई पुट हियर 1. सो अभी 2 इन दोनों को इक्वल करना है, राइट? सो 2 एंड 1 को इक्वल करना होगा, सो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 2. सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. सो बैलेंस करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2. अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया यानी क्या? आई विल हैव टू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. सो H2O के पहले आई विल हैव टू राइट 2. ओके, सो आई हैव रिटन 2 at the before H2O. So H2O के दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. ओके, नाउ चेक whether the equation is balanced. यहाँ पे एक सल्फर का एटम है, यहाँ पे एक सल्फर के एटम को दो सल्फर के एटम हो गए, एंड राइट साइड में सिर्फ एक ही सल्फर का एटम है. सो अभी तक ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है. ओके, सो थर्ड स्टेप इज डन. नाउ we'll have to move on to fourth step. Equalize the number of atoms of remaining elements. बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए उनको इक्वल, उनके एटम्स को इक्वलाइज करना है इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टिल द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस. जब तक अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, बाकी के एलिमेंट्स को इक्वलाइज करना है. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. नाउ अगेन लेट अस सी, यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे और यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे, वो हम लोग ने खत्म कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट? यहाँ पे अगेन टू एलिमेंट्स एंड हियर टू एलिमेंट्स. सो लेट अस टेक दोस. ओके, H2S ले सकते हैं एंड H2O ले सकते हैं. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? ओनली 2. Here you have 2 2s are 4. ये 2 2s are 4 कैसे हुआ? H2O में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, बट हाइड्रोजन के दो सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है इन H2O, राइट? बट H2O के खुद के दो मॉलिक्यूल्स है, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, राइट? सो यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 2 2s are 4, राइट? सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन के एटम्स है. सो वी कैन ट्राई टू इक्वेट दोस टू. सो दिस यू विल टेक दिस and this and try to equate hydrogen atoms. Okay, so hydrogen atoms in reactants will be H2S and hydrogen atoms in product side will be H2O. So यहाँ पे पहले दो atoms थे, so I've written 2 here, and यहाँ पे 2 2s are 4 हो गया. So अभी मुझे दोनों को equal करना है. So initially 2 and 4 थे, initially यानी पहले. Okay, तो balance करने के लिए मुझे 2 को 2 से multiply करना पड़ेगा. 2 2s are 4 मिल जाएगा, so it will be balanced, right? सो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी H2S को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो H2S के पहले मैं 2 लिख दूंगा. ओके, सो आई हैव रिटन 2 बिफोर H2S. अगेन चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट. यहाँ पे सल्फर का एक एलिमेंट है और एक एटम है. यहाँ पे सल्फर के अभी दो एटम्स हो गए. ओके, यहाँ पे बाजू में 2 है, राइट? सो
2 2s of 4 हाइड्रोजन के एटम एंड S into 2. ओके, सो सल्फर के भी अभी 2 एटम्स हो गए. सो यहाँ के 2 एटम सल्फर के और यहाँ का 1 एटम, 3 एटम्स हो गए सल्फर के. एंड राइट साइड में अभी भी एक ही एटम है सल्फर का, तो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है. सो यू हैव टू कंटिन्यू दिस स्टेप. ओके, व्हाई विल वी कंटिन्यू दिस स्टेप? Because step number 4 says that till the equation is completely balanced, we have to keep doing step number 4. Okay, so our sum is our equation is not yet balanced, so we'll continue with step number 4. So this is where we had balanced it till now. अभी सल्फर को बैलेंस करना है, राइट? सो सल्फर को बैलेंस करने के लिए we'll have to consider both of them, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, राइट? सो मुझे इन दोनों को लेना पड़ेगा रिएक्टेंट्स के साइड, और राइट साइड में सिर्फ एक ही है तो उसको ले लेंगे. ओके, अभी क्या बैलेंस करते हैं? सल्फर को. सो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स यू आर बैलेंसिंग, एंड रिएक्टेंट्स में दोनों में देखना है, SO2 में भी देखना है, H2S में भी देखना है. एंड इन प्रोडक्ट साइड यू हैव टू ओनली लुक इन S व्हिच इज सल्फर. तो यहाँ पे टोटल 3 है, राइट? यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर, क्योंकि बाजू में अभी 2 लिख दिया. सो टोटल 3 सल्फर एटम्स, राइट साइड में ओनली 1 सल्फर एटम. So you have to multiply this by 3, right, to balance it. Okay, पहले 3 और 1 था, अभी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे then you will get 3 over here, और फिर बैलेंस हो जाएगा, right? So that these two numbers become equal. So यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या? S को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी S के पहले 3 लिख देना है. Okay, so write S के पहले 3. Now again let us check. यहाँ पे 1 सल्फर एटम, यहाँ पे 2 सल्फर एटम, सो 3 हो गए, 2 + 1. यहाँ पे 3 सल्फर एटम, तो सल्फर एटम इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स, राइट? बाजू में 2 लिखा है, सो ऑक्सीजन एटम्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड. नेक्स्ट लेट अस चेक हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 2s of 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे भी 2 2s of 4 हाइड्रोजन एटम्स, सो दोस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ. ओके, सो step 4 is complete because हम लोग का equation अभी is completely balanced. Now step number 5 is write down the final balanced equation. Okay, so just put it in the pencil box and that's your final answer. So we have balanced this chemical equation. Okay, so if you see it's a long process, और तुम लोग को बीच बीच के काफी steps, काफी सारे tables बनाने पड़ेंगे. So for you to remember कौन से टेबल्स बनाने, कैसे टेबल्स बनाने, किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, इफ इट वाज नॉट क्लियर, we'll do one more. Okay, I'll show you one more how we can solve one more. I'll show you one more example of balancing a chemical equation. Okay, so we have seen second equation being balanced. Now we can try to balance the first equation. Okay, so again let us start our steps. First step is write the chemical equation, which is very simple, we just copy it from the question. Next is compare the number of atoms of various elements present in the two sides of the equation. Okay, so for example यहाँ पे, okay, so यहाँ पे if you see you will put elements over here. कितने elements है यहाँ पे? हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे S for sulfur सेकेंड में लिख दिया, O for oxygen थर्ड में लिख दिया. Okay, then यहाँ पे you can see hydrogen which is already written here, oxygen is also already written over here. Okay, so you have only 3 elements. Now compare the number of atoms on both the sides for all these elements. Okay, so hydrogen के left side में कितने? Here you have 2 hydrogen atoms, here you have 2 hydrogen atoms, so 2 + 2 4 हो गए, so left side में 4. Right side में you only have 2 atoms of hydrogen. Next sulfur, here you have 2 sulfur atoms, so you've put 2 here, and here you have 1 sulfur atom, so you've put 1 here. Last oxygen, here you have 7 oxygen atoms and here you have 1, so 7 + 1 8 हो गया. And last यहाँ पे 4 oxygen के atoms है, so you put 4 here. So first second step is done. Now we'll move on to third step. Okay, what is third step? Choose the reactant or product having maximum number of atoms and equalize its atoms on both sides. जिस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको चूज करना, और उनको पहले उनके एटम्स को पहले इक्वेट करना है. ओके, सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन.
यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, तो इन दोनों में से पहले लेफ्ट साइड वाले का इक्वेट करेंगे एटम्स को, एंड राइट साइड में तो एक ही ऑप्शन है. सो विच टू विल बी इक्वेट, विच टू मॉलिक्यूल्स के एटम्स विल बी इक्वेट फर्स्ट, दीज टू. ओके, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 3 है. इसको और इसको, आई मीन H2O एंड H2SO4 को अगर तुम लोग पहले इक्वेट करोगे, देन देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड स्टेप, जिसमें यू हैव मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको पहले इक्वेट कर लो. ओके, ओके, बिफोर दैट विच एटम विल यू इक्वेट? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, सो दैट इज ऑलरेडी इक्वल. नेक्स्ट सल्फर, सल्फर यू हैव टू एटम्स ऑफ सल्फर हियर एंड 1 एटम ऑफ सल्फर हियर, तो सल्फर को इक्वेट कर सकते हो. ओके, सो यू विल इक्वेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स. रिएक्टेंट्स में यू विल लुक हियर एंड प्रोडक्ट्स में यू विल लुक हियर इन H2SO4. सो पहले सल्फर के कितने एटम्स थे? यहाँ पे 2, सो आई पुट 2 हियर, एंड प्रोडक्ट्स में कितने थे? 1, सो आई पुट 1 हियर. नाउ इफ यू वांट टू इक्वलाइज दिस, दोनों नंबर्स को इक्वल करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, सो यू पुट 2 ओवर हियर, so you put 2 over here and you get this particular equation. Then you have to also check if the equation is balanced after this step, right? So let us check if the equation is balanced. Here you have 2 hydrogen atoms and here you have 2 hydrogen atoms, so total 4 हो गया. 2 plus 2 4. So यहाँ पे भी 2 2s are 4 हो गया, so 4 atoms हो गए हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन is balanced. Next sulfur, here you have 2 sulfur atoms and here also you have 2 sulfur atoms, कि यहाँ पे बाजू में पूरे के पूरे H2SO4 के लिए 2 लिखा है, तो सल्फर भी 2 atoms हो गए. So 2 sulfur atoms here and 2 sulfur atoms here, so sulfur is also balanced. Last we will check oxygen. Here you have 7 oxygen atoms and here 1, so 7 plus 1 8 oxygen atoms. यहाँ पे you have 4 oxygen atoms but बाहर 2 लिखा है, so 2 into 4 8, 2 4s are 8 oxygen atoms हो गए. So oxygen is also balanced, so all hydrogen, sulfur and oxygen have been balanced. Okay, so basically हम लोग को थर्ड स्टेप के बाद में ही इक्वेशन बैलेंस हो चुका है. सो यू नीड नॉट डू द फोर्थ स्टेप, डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये तुम लोग का फाइनल आंसर है, विच यू शुड पुट इन पेंसिल बॉक्स. ओके, so first one was very much easy, so we are done with the second one and we are done with the first one. दोनों को मैंने completely तुम लोग को explain किया. Now we are going to try one together. Okay, साथ में करेंगे. I won't do the entire thing for your. Okay, so let's do the fourth one, last one. So we'll try last one doing together. So keep your notebooks and pens ready. Okay, I will be helping you in between. If you think you haven't understood anything, that also is okay for now. Let's try one together. Okay, and I'm sure when I'll be guiding you, when I'll be helping you to balance a chemical equation, it will be a little more easier. Okay, and when you do it by yourself, खुद से जब करके गलती करके when you correct your mistakes, then you will have better understanding. Okay, so let us do the fourth sum together now. So first step is obviously to write the chemical equation as it is. Next step क्या होता है? To compare the atoms of each element on both sides. Okay, so you have to make that table, right? Which table? यहाँ पे elements लिखोगे, फिर यहाँ पे number of atoms in reactants, number of atoms in products, और फिर उसका table बना के लिख दोगे, right? So try to make that table first. I'll wait for 5 seconds for you to make that table. और उसमें कितने elements है सारे fill कर दो. Okay. Okay, I hope you paused the video here and you have made that table. Okay, so the table should have looked something like this. Now that you know how the table looks, now fill the table completely. यहाँ पे जितने भी elements है सारे fill कर दो, कितने atoms है left side और right side में वो भी fill कर दो. Okay, again I'm going to wait for 5 seconds, pause the video and fill this table and then we will check कहाँ पे गलती हो रही है. Okay. Okay, I hope you have paused the video and you have filled the table now. Okay, now check your answers. So there are 4 elements here. First is Na, which is sodium, यहाँ पे लिख दो. O is oxygen, which comes here. H is hydrogen, which comes here. Hydrogen we have already written. Sulfur, you will write it here. Oxygen we have already written here. Okay, so जो elements left hand side में, same elements right hand side में होंगे. Then you put the number of atoms. Sodium is only 1, so you put 1 here. But right side में sodium 2 atoms है यहाँ पे, so you put 2 here. Oxygen, यहाँ पे 1 atom of oxygen, यहाँ पे 4 atoms of oxygen. So 1 plus 4 is 5, so you put 5 here. Similarly, यहाँ पे 4 atoms of oxygen here and 1 atom of oxygen here, so 5.
hydrogen, one atom of hydrogen here, two atoms of hydrogen here, so 2 plus 1 is 3. Right hand side mein two atoms of hydrogen here, so you put 2 here. Last, sulfur, one atom of sulfur here, so you put 1 here, and one atom of sulfur here, so you put 1 over here. So just check whether you were able to fill this entire table completely by yourself correctly. If not, then make the corrections. Okay, now we are going to move ahead. What is the next step? You choose molecules जिसमें it has maximum number of elements, right? So यहाँ पे कितने okay, you choose by yourself. Okay, कौन से दो molecules का तुम लोग पहले atoms equate करोगे? You choose. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds for you all to choose. Okay, I hope you have made your decision. कौन से दो molecules के atoms को तुम पहले equate करोगे? So here you have 3 elements. Okay, sodium, oxygen, hydrogen. यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे भी 3 है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे 2 है. सो इसको तो तुम लास्ट में करोगे, उसमें कम एलिमेंट्स है. सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस में? इन तीनों में, इन दो और इन दो में. ओके, सो लेट अस सी, कैन यू टेक दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट? इन दोनों को ले सकते हो क्या? चेक करो. यहाँ पे सोडियम का एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो. सो लेट अस टेक दोस टू. So just check whether you made the correct. Did you choose the correct molecules to equate first? अगर तुम ये वाले ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होता? यहाँ पे H2SO4 एंड Na2SO4 ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होता? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको इक्वेट नहीं कर पाओगे. यहाँ पे सल्फर का एक एटम है, यहाँ पे भी सल्फर का एक ही एटम है, तो ऑलरेडी इक्वेटेड है. यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो वो भी ऑलरेडी इक्वेटेड है. तो तुम इसको और इसको नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें ये वाला और ये वाला ही लेना है. ओके, ग्रेट. नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू इक्वेट देम. ओके, नाउ यू नो, राइट? यहाँ पे तुम लोग एक टेबल बनाना पड़ेगा. यू आर इक्वेटिंग विच सोडियम एटम्स, राइट? सो यू विल राइट इक्वेटिंग सोडियम एटम्स हियर, देन यू विल राइट sodium atoms in reactants, sodium atoms in products, initially and balance. So just make that table first. I'll wait for 5 seconds for you to make that table by yourself. Okay. Okay, I hope you paused and you have tried to make your table by yourself. Okay, ये खुद से बनाना आना चाहिए table exam में. So this is how the table will look like. Okay, so number of sodium atoms पहले कितना था और balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा? So reactant में where will you see NaOH? So in NaOH, in product where will you see Na2SO4, which is sodium sulfate. Okay. So now that you know how the table should look like, now try to fill the numbers. Okay, and equate करके final equation भी लिख दो. Okay. Write the number of atoms, equate it, and write the final equation. I'll wait for 5 seconds. I'll pause the video here and do this step. Okay. Okay, I hope you paused the video and have filled the table now, and you've also written the equation now. Okay, let us see the correct answers. So sodium, right? यहाँ पे एक atom है, so I've written 1 over here. यहाँ पे 2 atoms है, so I've written 2 over here. So to balance, I will multiply 1 by 2. So if I'm multiplying this by 2, it means I will have to multiply NaOH by 2. So यहाँ पे मैं 2 से here I will write 2. Okay. So how will my equation look like? 2 NaOH I will write instead of just NaOH. So my step number 3 has been done. Okay, step number 3 is done. तो step number 3 के end में क्या लिखा होता है? Just check whether the equation is already balanced. कभी कभी step number 3 में equation balance हो जाता है. So let us check. यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स, यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स. So sodium has been equated. Okay. फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, क्योंकि बाजू में 2 लिख दिया हम लोग ने. So 2 and यहाँ पे 4. So 4 plus 2 is 6. लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन के एटम्स है, राइट साइड में 4 and यहाँ पे एक ही है. So 4 plus 1 is 5. So oxygen is not balanced yet. So now we'll have to move on to the fourth step. Okay, so this is the equation we get. I've rewritten it again. वापस लिख दिया मैंने. Now what is fourth step? अभी बचे हुए एटम्स को इक्वेट करना है जब तक ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाता. Okay, so what are the which next element will you choose? Okay, so again I'm going to give you all 5 seconds for you to make that decision. You can pause the video and
थिंक तुम कौन से दो मॉलिक्यूल्स को या कौन से एटम को अभी इक्वेट करोगे. ओके, आई विल वेट फॉर 5 seconds. ओके, आई होप यू पॉज द वीडियो एंड यू हैव मेड योर डिसीजन. तुम लोग को रीजन भी पता है कि तुम लोग वो उन्हीं उसी एलिमेंट को क्यों इक्वेट करोगे. सबसे पहला ख्याल क्या आता है, लेट अस इक्वेट ऑक्सीजन. बट ऑक्सीजन इज वेरी डिफिकल्ट टू इक्वेट. क्यों? यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे सब सारे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इक्वेट इट. ओके, सो लेट अस नॉट इक्वेट ऑक्सीजन, लेट अस इक्वेट हाइड्रोजन. ओके, so hydrogen abhi again hydrogen has the same problem. Hydrogen you have here also, hydrogen you have here also. तुम्हें इन दोनों में हाइड्रोजन देखना पड़ेगा. Here you have hydrogen only in H2O. Okay, so you will equate hydrogen atoms in first both in reactants and in H2O in products. Okay, so now that you know हम लोग हाइड्रोजन इक्वेट करने वाले, make the table by yourself. खुद से टेबल बना सकते हो क्या, चेक करो. Okay, without seeing, and then you can cross check when I show it to you all. Okay, I'll wait for 5 seconds for you all to make the table without seeing. Try it without seeing now. Okay, I hope you pause the video and have tried to make your table by yourself. So क्या आएगा, हम लोग हाइड्रोजन को इक्वेट कर रहे हैं, राइट. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पहले कितना था और बैलेंस करने के लिए कितना होगा. In reactants, you will have to look in both NaOH and H2SO4. Okay, so in both you will have to look, and in product you only have to look in H2O. Okay, so यहाँ पे हम लोग वो स्टेप क्यों नहीं यूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसको चूज करना चाहिए. तो Na2SO4 को चूज करना चाहिए था. वो स्टेप नंबर 3 था, वो हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया. अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में ऐसा नहीं बोला है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट जिसमें होगा उसी को पहले लेना है. वो सिर्फ स्टेप नंबर 3 में बोला है. ओके, Great. Now that you know how this table looks like, now try to fill this table. यहाँ पे सारे numbers भर दो, equate कर दो और write the new equation. Okay, I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, I hope you pause the video. तुम लोग ने ये table fill कर दिया है, balance कर दिया है और एक नया equation लिख दिया है. Okay, so this is how the table will look like. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, 2 कैसे हो गया क्योंकि बाजू में भी 2 लिख दिया है ना हम लोग ने. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए एंड यहाँ पे यू हैव 2. सो 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया. एंड राइट साइड में यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स है. सो 2 ओवर हियर. सो बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को सेम करने के लिए 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे H2O के बाजू में आई हैव टू राइट 2. ओके, सो आई हैव डन दैट. 2 के H2O के बाजू में 2 लिख दिया. ओके, अगेन नाउ चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. यहाँ पे 2 सोडियम एटम्स, यहाँ पे भी 2 सोडियम एटम्स. सोडियम इज बैलेंस्ड. यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 है. ओके, बाजू में 2 लिखा, राइट. सो 2 ऑक्सीजन एटम्स हियर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स हियर. सो 4 प्लस 2 इज 6. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हो गए. ओके, यहाँ पे एक है बट बाजू में 2 लिखा है. सो 2 plus 4 becomes 6. So oxygen is also balanced now. Last, let us check hydrogen. Hydrogen यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है because बाजू में 2 लिखा है. Okay, so 2 hydrogen atoms in NaOH, then 2 hydrogen atoms here. So 2 plus 2 4 हो गया. So left side में 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, राइट साइड में भी यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स है. हाइड्रोजन ऑल्सो बैलेंस्ड. लास्ट सल्फर देखेंगे. सल्फर, हियर यू हैव 1 atom of sulfur. Here also you have 1 atom of sulfur, so that is also balanced. So सारे elements अभी balance हो चुके हैं. So we are done with step number 4. What is step number 5? Just write the final balanced equation in pencil box. So we are done with the last step also. So first two equations I showed you all how to balance completely. Fourth one we have done it together. Okay, तुम लोग ने खुद से try किया and try करते थे, कुछ भी mistakes हो गए, you have corrected those mistakes and we have solved it together correctly now. Okay, so 3 हम लोग ने अभी solve कर दिया. Now fourth one you all try by yourself. Fourth question, fourth which is यहाँ पे जो C equation है, that you all will balance as by yourself खुद से as practice. Okay, so I'm giving this as your practice question. That's it for this learning session. Just check whether you have accomplished the learning session for today. Okay, will you be able to write balanced chemical equations if I give you an unbalanced chemical equation? खुद से तुम balance कर पाओगे कि नहीं?
एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू बैलेंस, क्योंकि इसके लिए काफी प्रैक्टिस लगता है। सिर्फ 3 या 4 सम्स खुद से करने से ये इतना अच्छे से नहीं आएगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर सम्स, ओके। सो द मोर इक्वेशंस यू प्रैक्टिस द बेटर you will get at it. Also, one more thing I want to tell you all that it is not important from board point of view. If you see पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, they haven't really asked students to balance chemical equations. So if you're finding it very difficult, मैं सोचो तुम लोग को आज का लर्निंग सेशन कुछ भी नहीं समझा, okay, and you're finding it very confusing, feel free to keep this out in options, okay, because this is not a very important question, not an important question from board point of view. Board generally question नहीं पूछ रहा, okay. But if you're going to take science after 10th standard, or you might, if there's a chance कि तुम लोग साइंस ले सकते हो, then you have to practice, okay. कि 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग कोई वापस सिखाएगा नहीं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, अभी ही तुम लोग को सीखना है केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करना है। सो प्रैक्टिस इज राइट नाउ, और इफ यू वांट 80% 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, इफ दैट इज योर टारगेट, अगेन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस आना चाहिए। बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, सो यू कैन लीव इट, ओके। So that's it for this learning session. I hope you have some understanding of balancing chemical equation. That's it for this learning session. I hope we'll see each other in the next one. Till then, see you guys. Bye. Take care.